welcome to the part 2 of unit 3 of technical communication. So here we will be discussing about speaking skills, so in which we will talking about audience awareness, know who is listening, age, knowledge level, use words and samples, examples they understand. So we will talking about speaking skills. So speaking skills के अंदर you should know, you should be aware of your audience. I mean who is your audience. जैसे कि अब मैं जो वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, तो मैं स्पीक बोल रही हूँ, ठीक है। अब मैं जो है ऐसे इन एज ग्रुप के लिए जो बोल रही हूँ जो सेकेंड ईयर में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑडियंस आई गेस 19-20 के बीच वाली ऑडियंस होगी जो अभी अपने करंटली सेकेंड सेमेस्टर में होगी। तो ये उस एज ग्रुप के लिए यू शुड नो द लेवल ऑफ़ योर ऑडियंस, और ठीक है, तो उस हिसाब से आप जो है अपने स्पीकिंग स्किल्स बोल सकते हो, ठीक है। तो आप अपने लाइक एम्बियंस के अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के लिए, एंड यू कैन यूज़ वर्ड्स एंड एग्जाम्पल्स सो दैट दे अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। उसके बाद अगर वॉइस, तो आपका क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, मतलब जैसे कि आप वर्ड को कैसे स्ट्रेस करते हो, कैसे बोलते हो, योर प्रोनाउंसिएशन शुड बी ग्रेट सो दैट नो बडी हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। एंड कुछ फेस मीन्स नॉट टू फास्ट और स्लो, कुछ ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना है, कुछ ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है, एट राइट वॉल्यूम, ठीक है। वोकैबलरी, इसके मतलब है कि कौन से वर्ड्स, वोकैबलरी ये सब बेसिकली वर्ड जो आप सीखते हो। अब जैसे कुछ बोलते हैं दे हैव लर्न न्यू वोकैबलरी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई नया वर्ड सीखा, ठीक है। तो चूज सिंपल एंड करेक्ट वर्ड्स, एग्जैक्टली यू शुड बी वेरी सिंपल टूवर्ड्स योर वर्ड्स, अवॉइड jargon. You need to be very simple towards your words so that people just understand it. You need to avoid jargons unless the audience understand it. I mean, you have to be very selective towards your words because you're using a jargon. So what is jargon here is there are specific words which are really difficult, okay, and they are used by a professional or a groups, and that comes under category of difficult words which normal people might have face in difficulty, might face in understanding them, okay। So इसका मतलब ये है कि आपको अपने वोकैबलरी के लेके बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट यूज़ जैगन्स, जो कि मैंने आपको बताया, हार्ड वर्ड्स जो कि प्रोफेशनल या फिर एक ग्रुप में यूज़ हो जाते हैं। जैसे अब सपोज इफ़ आई टॉक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर बहुत सारे जैगन्स यूज़ किए जाते होंगे। अगर हम नॉर्मल इंसान वहाँ पर जाके बैठेगा जिसको थोड़ी नॉलेज नहीं होगी उन वर्ड्स के बारे में, तो वो नहीं समझ पाएगा। तो यू शुड बी वेरी सिलेक्टिव टूवर्ड्स योर वर्ड्स सो दैट आपके ऑडियंस अंडरस्टैंड करें, ठीक है। पैरा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इससे पहले भी मैं डिस्कस किया था। पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है आपकी टोन, आपके पिच और आपके एक्सप्रेशन एंड हाउ मच यू आर टेकिंग पॉज। तो ये आपके कन्वे करते हैं आपके इमोशंस, एम्फसाइज करता है। एम्फसाइज का मतलब होता है कि आपकी बातों पे इम्पोर्टेंस देना। एम्फसाइज मीन्स गिविंग एन इम्पोर्टेंस टू समथिंग। So if I am saying something, repeatedly or in continuation, that means I am emphasizing that topic, ठीक है। तो यहाँ पर पैरा लैंग्वेज इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका पिच, आपका एक्सप्रेशन, आपका पॉज बहुत मैटर करता है फॉर अ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब ग्रुप डिस्कशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देर आर सम टिप्स, यू शुड बी लिसन एक्टिवली, दैट मीन्स यू नीड टू बी अ एक्टिव लिसनर in which you are responding as well as you're listening. Responding doesn't mean that you will just interrupt in between. It means that you're giving a short sign that you're listening and you're being active to that conversation. Speak clearly and confidently. Exactly, when you're in a group discussion, all eyes are on you. So whatever you need to be whatever you need to speak, that should be very clear and confident so that you just don't fumble and hesitate at that point. Because if you just fumble and hesitate at that point, people might lose interest, people might not look at you the way you were expecting them to look at you. You need to be stay on topic, like I have already told you about conciseness, and you should respect others and opinions. If someone is listening to you, that means you also have to listen to them. You cannot just think that it's when will my turn come, I need to speak. You have to be respectful for their opinion as well, and you can give example and support the facts through points, okay. I mean, you can take examples and facts to support your point, okay.